Okay, so is the screen visible to everyone? Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So in previous class we have studied about the characteristics of FET, and as per the characteristics there are three regions we have already studied. What are those regions? That is mainly ohmic region, cutoff region, saturation or active region. And apart from these, there are also another region which is breakdown region. That means after saturation region, there is a breakdown region. So basically there are four regions. Among these four, three regions are very important regions, that are ohmic region, cutoff region, saturation region, and active region. Now in today's discussion, we will see what are the parameters. Like in case of your BJT, there was alpha, beta, gamma. These are the parameters. Okay. And now in case of FET, what are the parameters? So to define the parameters, we have to first go through the diagram session of the last session. Okay, that is connection mechanism or the terminology of FET. So in that class, we watched this kind of diagram. This kind of diagram, and it is a P type or N type, or P channel or N channel. That is arrow inside, so N channel. ठीक है, अगर ये भूल जाओ कि एरो तो एन फॉर एंटर, एंटर 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 हो रहा है, ठीक है, एफईटी में एंटर हो रहा है, सो दैट इज एन चैनल, ठीक है, ये याद। और ये है मेरा गेट, गेट, ये है मेरा ड्रेन, एंड दिस इज सोर्स। ओके, सो नाउ we have to know the parameters. So to know about the parameters, I have to first see in which section what parameters is applied. So Ig, N type. So both will enter. That is, this is ID, drain current, and ये enter हो रहा है, तो यहाँ से सोर्स से बाहर जाएगा, that is IS, ठीक है। एंड यहाँ पे गेट है, इनपुट और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सो VGS, एंड इस पोर्शन पे मेरा वोल्टेज होगा VDS, ठीक है। सो these are the parameter. Okay, so first parameter is ID, that is gate current, sorry, drain current. The current which will flow through the drain is known as drain current. Second one is IS, source current, the current which is flowing through the source power portion or source port is known as source current. Next is VGS, gate to source voltage, ठीक है, gate to source voltage, gate to source voltage. And fourth is VDS, drain to source voltage. So these four parameters we have to know. This is the basic parameters for FET. Now next is, by using these basic parameters, ठीक है, my other parameters will be implemented. और अदर पैरामीटर्स क्या है, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, दैट इज AC drain resistance. I will define, okay?
But first of all, I will write the entire parameters. Then one by one I will define. ठीक है, ये चारों में कोई दिक्कत नहीं है. These are the basic parameters. The current which is passing through the drain portion is known as drain current. The current which is passing through source portion is known as source current. The voltage potential difference between gate and source is known as gate to source voltage, and the potential difference between drain and source is known as drain to source voltage. These are the four basic parameters. Now, with the help of these four parameters, basic parameters, we will define the others parameters. And these parameters is very much important to calculate the performance of FET. And among these, the first one is AC drain resistance. Okay. First I will write, then I will define. क्या है सर? हेलो सर. हाँ, AC drain resistance. First I will write all the parameters, then I will define one by one. ठीक है. Next is transconductance. Transconductance, and it is denoted by GM. Yeah. I will define one by one. Last one is amplification factor. Amplification factor, and it is denoted by mu. Normal symbol mu. Okay. Now I am going to define the three parameters one by one. So first one is AC drain resistance. AC drain resistance. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना टर्म है टोटल, 3 टर्म्स आर देयर. फर्स्ट वन एसी, दूसरा बात है ड्रेन, और तीसरा है रेजिस्टेंस. तो ये क्या हो सकता है, दैट इज इट विल बी इन द पार्ट ऑफ दिस ड्रेन पोर्शन. ठीक है, तो ड्रेन पोर्शन में देखो मेरा सोर्स लिया गया है, सोर्स को बेस लिया गया है, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज है VDS, एंड यहाँ पे मेरा करंट है ID. ठीक है, सो AC drain resistance is the resistance which oppose the current to move freely and enter in the FET in case of N channel FET, and it will resist the current to exit from the FET in case of P channel FET. रेजिस्टेंस जहां पे है that will resist क्या करेगा, करंट का फ्लो को रेजिस्ट करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल this resistance will be in drain portion. The resistance will be in ड्रेन पोर्शन. ये है इसका पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है, इसका काम, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्ड ऑफ रेजिस्टेंस, resist the flow of current. गुड. सो रेजिस्ट Reduce the current. ठीक है, सो यहां पे देखो करंट कौन सा है, ड्रेन पोर्शन में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ID sir. ID. So it will resist the flow of ID current. Okay, so it will resist the flow of ID. ठीक है, and this ID will be resist or obstructed to enter in the FET in case of N channel, or to exit from the FET in case of P channel.
ठीक है, ये है एसी ड्रेन रेजिस्टेंस का काम। ओके, नाउ इसको एक टर्मोलॉजी से हम डिफाइन किए, दैट इज आर डी। ठीक है, दैट इज द ड्रेन रेजिस्टेंस, आर डी, एंड इट विल रेजिस्ट द एसी ड्रेन करंट। ठीक है, सो नाउ आर डी अगर हम इसको एक न्यूमेरिकल और एक तुम्हारा सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर होगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? as we know, v equal to ir, so r equal to v by I। so देखो, ये पोर्शन किस पोर्शन में बिलोंग कर रहा है? इन द ड्रेन पोर्शन, एंड ड्रेन पोर्शन का वोल्टेज क्या है? vds, एंड करंट है id। so simply rd equal to v by I, so vds by id। ठीक है, ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो दिस इज द आरटी। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, और इसका रेंज कभी कभी तुम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, रेंज ऑफ आर डी इन एफईटी क्या होता है, ये याद रखना। 10 किलो ओम से 1 मेगा ओम। ठीक है, 10 किलो ओम से 1 मेगा ओम इसका रेंज होता है। ठीक है, दैट इज द रेंज ऑफ आर डी इन एफईटी इन जनरल। So now next is known as transconductance. Transconductance. Second is transconductance. सो हाँ बोलो। एक बार ऊपर से बता देते फिर से। ऊपर कहाँ से? एकदम ऊपर से? ऐसे ही शुरू से एक बार। हाँ एकदम थोड़ा वो ठीक, मतलब हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, लैपटॉप से ज्वाइन हो रहे थे, इधर उधर हो रहा था। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखो, आज हम देखेंगे एफईटी में कौन कौन सा पैरामीटर यूज होता है। ठीक है, सो टू नो द पैरामीटर्स, और टू लर्न अबाउट, और टू know about the parameters, we have to first note the basic parameters which are used in FET. So in that case, what are the basic parameters? First of all, we have to find out. And in previous class, I have shown this diagram. Through this diagram, you will see that this is an N channel FET. Through these parameters, you can see that if this is an FET, okay, and the gate portion, drain portion, and source portion is arranged in this way. This is the general way to arrange the connection. In this portion, I will give a connection, and in this portion also I will give the connection. This is the input portion, this is the output portion, and we have to arrange the FET in that way. And to, if we connect the FET in such way, so we will get some basic parameters that will work on that FET. Okay, so first of all, there is three terminals. Okay, so three terminals occupying three portion of inputs and outputs. So since this gate portion is the inputs portion, and your FET is voltage control device, so our input will be taken as input voltage control. Input voltage will control the output of the FET. So in that case, this is the input portion. So input voltage will be applied, and input voltage is nothing but the potential difference between gate and source. So it can be denoted by VGS, voltage gate to source, or we can say gate to source voltage. Okay, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, gate to source voltage। ये हो गया एक पैरामीटर। सर नेक्स्ट, आउटपुट में
हाँ कोई कुछ। सर, हाँ बोलो। वो जो हम लोग जैसे देखे थे कि वो जो ट्रांजिस्टर था उसमें एक पोर्ट जो था वो ग्राउंडेड हो रहा था, तो इसमें भी कोई पोर्ट ग्राउंड होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन अब कनेक्शन में हम अभी हम कनेक्शन नहीं जा रहे हैं, हम पैरामीटर देख रहे हैं, ठीक है। इन मैक्सिमम केसेस सोर्स पोर्शन विल बी दिस पोर्शन, योर दिस सोर्स पोर्शन विल बी ग्राउंडेड इन केस ऑफ एफईटी, ठीक है। ये सोर्स पोर्शन, ओके सर। ठीक है। तो अभी हम कनेक्शन में नहीं जा रहे हैं, अभी हम पैरामीटर्स देख रहे हैं, पैरामीटर्स देखने के बाद कनेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट ओके सर। पोर्शन, यहाँ पे मेरा इनपुट कनेक्ट करने के लिए अब ये पोर्शन मेरा रेडी हो गया। सो इनपुट जो भी जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज। नाउ ये हो गया इनपुट पोर्शन। नाउ आउटपुट पोर्शन में हम जा रहे हैं। दैट इज आउटपुट मेरा करंट भी हो सकता है, आउटपुट मेरा वोल्टेज भी हो सकता है। सो अगर वोल्टेज हुआ तो वोल्टेज विल बी सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन योर ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है। सो ये इस वोल्टेज को हम कहेंगे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, दैट इज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। नाउ ये वोल्टेज पैरामीटर्स, दो वोल्टेज पैरामीटर्स मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ गेट पोर्शन में मेरा कोई करंट कंपोनेंट जरूरत नहीं है। तुम आईजी दे सकते हो, बट आईजी इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सो वी विल यूज ओनली द इनपुट वोल्टेज, सो नो नीड टू गिव आईजी, ठीक है। अगर हम देना चाहें तो नो मैटर, तुम दे सकते हो, बट यहाँ पे सिंस ये बेसिक पैरामीटर्स या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन सा है? ड्यू टू दिस वोल्टेज some current will flow through gate, gate में कुछ current flow होगा, and that current is known as id, that is drain current, drain current। and some source grounded अगर होगा, तो अगर हम ये source को base बनाएंगे तो few leakage voltage leakage current will be there, तो एफईटी से कुछ करंट बाहर निकलेगा क्योंकि ये भी एंटर हो रहा है, ये भी एंटर हो रहा है, ठीक है। तो कुछ करंट लीकेज होकर बाहर आएगा, एंड दैट इज नोन एज सोर्स करंट। सो दीज आर द फोर बेसिक पैरामीटर्स, and using these four basic parameters we will define another three types of parameters which are based on these four parameters, and these three parameters are very important to calculate the performance or to analyze the performance of FET. And these parameters are AC drain resistance, that is denoted by RD, transconductance, which is denoted by GM, and amplification factor, it is also denoted by mu. So now one by one we will define this. So first of all, AC drain resistance. So as per its name, that is, this name consists three terms. That is, first term is AC, second term is drain, and third term is resistance. So AC means your characteristics will be same as your AC supply, okay, like sinusoidal. Drain means this, whatever quantity or whatever parameters we will define, that parameters is totally associated with drain, not source and gate, ठीक है। ये this will be associated only with drain portion. And resistance, the parameters is showing the characteristics like resistance, ठीक है। Like resistance, the parameters also show some characteristics, like it will be the ratio of VDS to ID, that is V equal to IR, so R equal to V by I, that is the resistance characteristics or property of resistance. So this AC drain resistance will be the ratio of VDS to ID. This is the basic definition, ठीक है। And it is denoted by RD. So as per RD is nothing but the resistance. So it will show some property like resistance, and the property of resistance is nothing but to resist the flow of current. Flow of current, which current? Since this resistance is occupied in drain portion, so obviously it will resist the flow of drain current, that is ID, and the direction of the current depending of your FET construction.
If the FET will be n channel FET, then the drain resistance will resist the flow of ID to enter in the FET. Okay, and if your FET will be P channel FET, then your resistance, drain resistance, that is RD, will resist the flow of ID, that is drain current, to exit from the FET. So since RD is denoted by a symbol, so obviously that symbol is nothing but a resistance, and since we have the mathematical expression for resistance, that is from Ohm's law, V equal to IR, so R equal to V by I, so that's why RD also can be defined by mathematical expression having the ratio VDS to ID. Both voltage and currents are the parameters which is situated at drain portion. So RD is voltage, that is VDS by ID. So this is the mathematical expression of AC drain resistance. And in general, whenever you are going to design any FET or whenever you are going to work with FET, you will see that in general cases, the range of RD will be from 10 kilo ohm to 1 mega ohm. Okay, remember this range 10 kilo ohm to 1 mega ohm. That is, under this range, the RD will work perfectly. Got it? Up to RD, AC drain resistance. Yes, sir. Okay. Now transconductance, and which is denoted by GL. Okay. So to define the transconductance, okay, conductance means Conductance, the property in which the conductor allow to pass the current. that is allow. It will allow. ठीक है. Yeah. Resist क्या करता है? Resistance क्या करता है? It will resist. Yes, Conductance will yes, sir. allow. So basically, conductance is 1 by resistance. Resistance. Can I Yes, write sir. this? Yes, sir. So Yes, sir. if resistance is denoted by the ratio of voltage by current, then conductance can be denoted by current by voltage. Current by voltage. Voltage. Now, this is the basic concept of conductance. Now, my question is, which current and which voltage ratio we will take? See the terminology. Yes, if conductance means IG, I, IG by VGS. Ig Am by I right? VGS. In the very beginning, I told that do not take Ig. Okay. 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 Take Now, ID, sir. ID. now why ID? ID by VGS. VGS. Why? BGS, sir. Why? Your answer is totally correct. But why? See, if we define only conductance, then what will happen? Simply, I have to find out this ratio, conductance. Transconductance means transfer conductance. The conductance due to transfer from input to output. Got it? Yeah. Input to output. Now move to the transconductance. Transconductance. Conductance. Now, this is the ratio of trans means Sir. transfer ratio. ठीक है? Transfer ratio, when we will use transfer ratio? When we will find the ratio between output by input. To find out the transfer Yes, ratio, sir. we will Sir. find the output by input. ठीक Sir. है?
सो यहाँ पे ऊपर रहेगा आउटपुट एंड नीचे रहेगा इनपुट। Sir, हाँ बोलो। my question is to why we ignore the sir IG current sir What is the in place basic of difference in between play. what is the basic difference between BJT and FET? That I told in previous class that BJT is known as current control device. Yes or no? Yes sir. FET is known as voltage control device. Yes or no? Yes Now tell me why it is known as voltage control device or current control device. You will get your answer yourself. ठीक है? एक मिनट रुको। Now tell me why BJT is known as current control and FET is known as voltage control device. You will find your answer yourself. तुम्हें खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा। Anyone who can explain? Anyone else? Why BJT is called as current control device and FET is called as voltage control device? You will get your answer. Why I am avoiding IG? sir, because the BJT control the sir current sir Wrong term. BJT will not control the current. Input current or will current. control the output. कीप इन माइंड, मैंने पहले भी कहा था जब ये डिफाइन कर रहा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करता है कि बीजेटी करंट को कंट्रोल करता है, एफईटी वोल्टेज को कंट्रोल करता है। नो, इन केस ऑफ बीजेटी पुट इन माइंड, हाँ एकदम माइंड में एकदम बैठा लो कि करंट कंट्रोल मींस इनपुट करंट विल कंट्रोल द आउटपुट, वट एवर द आउटपुट इट विल बी, मे बी करंट और वोल्टेज वट एवर इट मे बी, ठीक है। बट करंट कंट्रोल मतलब इनपुट करंट विल कंट्रोल द आउटपुट एंड वोल्टेज कंट्रोल मतलब इनपुट वोल्टेज विल कंट्रोल द आउटपुट। क्लियर हुआ यहाँ? Yes sir. ठीक है। नाउ सिंस Yes एफईटी sir. इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, तो इन केस ऑफ एफईटी input voltage will control the output, not input current. So if input current is not controlling the output, then we will not use that input current, बिकॉज वो उसका होना ना होना सेम है, वो करंट कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, इनपुट करंट कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। सो ऑब्वियसली इन केस ऑफ एफईटी आई एम टेकिंग इनपुट वोल्टेज। बीजेटी में देखो मैं हमेशा इनपुट करंट ले रहा था, आई आई बी आई सी वट एवर आई एम टेकिंग एज पर द कॉन्फ़िगरेशन, द इनपुट करंट इज कंसीडर्ड। यस और नो? Yes sir. ओके, अब क्लियर हुआ? Then, sir, in हाँ बोलो। in the derivation of transconduction is equal to output voltage by input voltage, we will write कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज ऑपोजिट टू transconduction as you write here, the last term transconductance is equal to output by input. Then we can say that it will be output voltage by input voltage. now we will see which output will be taken and which input will be taken. I am not writing completely, ठीक है, मैं आधा लिख रहा था तभी तुम्हारा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अभी मेरा लिखाई खत्म नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे ट्रांस है, तो ट्रांस मीन्स ट्रांसफर रेशियो। ट्रांसफर रेशियो हम कब यूज करते हैं? इनपुट आउटपुट बाय इनपुट। तो ये पोर्शन हो गया ट्रांस के लिए, ठीक है। नाउ इसके साथ कनेक्ट होगा करंट एंड वोल्टेज। तो एंटायर टर्म क्या हुआ? आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। समझ में आया कैसे तुम्हारा आईडी बाय वीजीएस हो रहा था? That output by input will be used since trans term is there, that is transfer ratio। transfer ratio कब यूज करते हैं? रेशियो बिटवीन आउटपुट बाय इनपुट, मेरा जितना इनपुट है उस हिसाब से मेरा आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए हम ट्रांस यूज करते हैं, ट्रांसफर रेशियो। तो ये क्या है? ट्रांसफर प्लस कंडक्टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। For trans, output by input ratio will be taken
and for conductance current by voltage will be taken. So entire तुम्हारा derivation हो गया transconductance is output current by input voltage. Now tell me what will be the output current, that is ID, and what will be the input voltage, that is VGS. ठीक है, and it is denoted by GM. समझ में आया? Sir, once more, please. Yes, sir. देखो कंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस. सो व्हाट डू वी मीन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन वोल्टेज टू करंट, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. नाउ कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस विल बी द रेशियो ऑफ इनवर्स रेजिस्टेंस, दैट इज करंट टू वोल्टेज. सो नाउ यहाँ पे टर्म देखो, लुक एट द टर्मोलॉजी. आई एम नॉट यूजिंग कंडक्टेंस टर्म, I am using transconductance, that is the trans will denoted by transfer ratio. Transfer ratio. Now, what do we mean by transfer ratio? That means whatever I am giving the output and whatever I am taking the output, that ratio to the given input. So output by input equal to transfer ratio. So yeah, in this case, the term is combination of two terms, that is trans and conductance. So transfer ratio, for transfer ratio, I am using output by input, and as per the definition of conductance, that is the ratio of current to voltage or current to voltage ratio. So for trans, it will be output by input, and for conductance, it will be current by voltage. So now combine both of them. So it will give you output current by input voltage. And in the case of FET, output current is ID, that will be taken from drain, and input voltage is VGS, that will be given in the gate to source port, that is voltage between gate to source. अब समझ में आया क्या क्यों होता है? Yes, sir. ट्रांसकंडक्टेंस का डेफिनेशन में इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट सॉरी Out. आउटपुट करंट आईडी टू गेट टू सोर्स वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज. सो दैट इज जीएम. Okay, and is Yes. its range range of GM for FET, इस रेंज होगा तुम्हारा 3000 to 3500 mho micro, 3000 micro mho to 3500 micro mho, and that mu is not related to amplification factor. Okay, this is unit micro, that is kilo, milli, nano, micro. So इसका रेंज है 3000 to 3500 micro mho. Okay, Okay, sir. now move to the third part, and your third part is amplification factor. Third part, amplification factor. And sometimes one point I forgotten to say, that sometimes your GM can be replaced by GFS. ठीक है? So GM और GFS सेम है, दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस. तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में GFS आया तो डोंट बी पैनिक कि सर ये नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो GM और GFS सेम थिंग. ओके, सो नाउ Sir, हाँ बोलो. where FS stand for what? कौन सा? FS stand for? ये एक्चुअली तुम्हारा FS इज द डिनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी टू सोर्स. ठीक है, बट ये यूज नहीं होता, पहले फ्रीक्वेंसी फैक्टर को यूज करते थे. ठीक है, ये उतना यूज नहीं होता. नाउअडेज जीएम इज यूज्ड, क्योंकि एफएस का सही मायने में डेरिवेशन में कोई हाथ नहीं है. फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग डिनोट नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं वोल्टेज या करंट पैरामीटर स्टैंड नहीं करवाऊंगा. ठीक है, Okay, sir. एक्चुअली दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड समटाइम इट इज नोन एज सोर्स फैक्टर. ठीक है, सोर्स फैक्टर यहाँ पे हम डिनोट ही नहीं करेंगे. So that's why in general case, most of the cases, instead of a GFS, your GM is used.
Now amplification factor. So amplification factor means, what do you mean by amplification factor? That is amplification factor. It is Sir, also output voltage by input voltage, sir. good. Output, In case of FET, sir. output voltage by input. Input voltage. Very good. VDS by VGS. Good. So amplification factor is the ratio, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, the ratio of drain to source voltage VDS to gate to source voltage is, that is VGS, is known as amplification factor of FET. नाउ यहाँ पे वोल्टेज क्यों लिया, क्योंकि मेरा इनपुट जो है वो वोल्टेज है। सो इनपुट अगर वोल्टेज लिए तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर में दोनों पैरामीटर सेम होना चाहिए। अगर एम्पलीफिकेशन फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू करंट ले रहे हैं तो इनपुट करंट आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट लेंगे। अगर एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन रेस्पेक्ट टू वोल्टेज ले रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज लेंगे। सो इन केस ऑफ एफईटी वी आर टेकिंग वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, सो आई हैव टू टेक द आउटपुट वोल्टेज। Okay, so it is denoted by mu, and mu is equal to VDS, ds, that is output voltage by VGS, and amplification factor is unitless, unitless, ठीक है। and amplification factor mu is basically very high, ठीक है, very high, very high, that is more than 1, ठीक है। output voltage is by input voltage is more than 1. Now the basic thing is, like your BJT, I have to find out the relationship between 3 parameters. BJT में क्या अल्फा बीटा गामा था, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा नहीं है, उसके बदले मेरा क्या है, RD है, GM है एंड म्यू है। इन तीनों का रिलेशनशिप आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट और आई हैव टू डेरिवेट, ठीक है। सो derive the relationship between RD, GM and mu. Okay, so first of all मैं कौन सा लास्ट यूज किया हूं, म्यू। सो म्यू इक्वल टू VDS by VGS, as you know from the derivation of mu. Now this can be written as VDS by VGS. Now look at the term, that is GM and your RD. RD equal to VDS by ID. RD equal to VDS by ID and GM equal to, GM का वैल्यू क्या है, ID by VGS, ID by VGS। ओके, सो देखो यहाँ पे ID टर्म दोनों में है, बट इन दिस केस म्यू में मेरा कोई ID टर्म नहीं है। टू इंट्रोड्यूस द ID टर्म आई कैन राइट दिस ID by ID। कैन आई राइट दिस? कैन आई राइट दिस? Yes, sir. ओके, नाउ इस ID को I can relate with this. So this can be written as VDS by ID into ID by VGS.
Can I write this? Sure. Yes, sir. Okay. Now, VDS by ID, it is RD. This is nothing but your RD, and this is nothing but your GM. So the relation between mu, RD and GM will be, that is RD, not multiplication with D, हाँ, ये total के साथ multiplication है. This is the relationship between your amplification factor, transconductors and drain resistance. So relationship between mu, RD and GM. ये तुम्हारा एग्जाम में पूछता है. ठीक है. What is, find the relationship between the parameters of FET. ठीक है. No need to write down the relation between VDS, VGS, ID and IS. ठीक है. Instead of that, you have to find out the relation between mu, RD and GM. So this is all about your parameters. Now we know about the parameters. Now after knowing that parameters, I have to know the working principle of FET. Okay. So working principle of FET, whenever we are going to know about the working principle of FET, first of all, we have to know about the types of FET, which types of FET can be used and what are their working, what are the working principles of the FET. So if FET can be divided, then it can be divided into two parts. One part is JFET, other part is MOSFET. JFET means junction field effect transistor. That means there is a substrate, gate यहाँ पे है, यहाँ पे ड्रेन है, यहाँ पे सोर्स है. ठीक है. तो यहाँ पे जंक्शन है. देखो यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे एक जंक्शन है. तो ये हो गया JFET. और due to construction of JFET, a channel will be created. ये जो है ये channel है from the previous class. ठीक है. ये channel है. तो JFET can be classified into two types. One is N channel and another is Another. P channel. P channel JFET. And this is this is N channel JFET and this is P channel JFET. That is junction field effect transistor. And other type of transistor is MOSFET. That is MOSFET is metal oxide semiconductor. That is MOS stands for metal oxide semiconductor. FET. ठीक है. इसके बारे में इस description and working principle I will discuss later. So FET MOSFET is denoted by depletion type MOSFET, which is known as DMOS or DMOSFET, and another is enhancement type MOSFET. Enhancement type MOSFET, and it is also known as EMOS or EMOSFET. So these are the type of FET, and as per their working principle, as per their construction, the MOSFET will work. So in previous class, I have already discussed the channel type FET, that is JFET. Like अगर P type है and तुम्हारा gate source and तुम्हारा जो drain है वो अगर वो N type का होगा, and due to this your channel will be increased or decreased. So this is
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेएफईटी व्हिच इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। इसका सिर्फ बेसिक जो नॉलेज है दैट इज सिमिलर टू योर बीजेटी और ट्रांजिस्टर और पीएनपी junction diode, like your channel area will be increase or decrease as per the connection mechanism. Now our main focus is MOSFET, which is mostly used in day-to-day life, or which is mostly used and in most of the electronics devices। ठीक है, ये मॉसफेट तुम लोग देखे हुए हो। ठीक है, तो अगर गिव मी, ओके, आई विल स्विच द विंडो टू योर, आई विल स्विच द विंडो, जस्ट गिव मी अ मिनट। Is the screen visible to all of you? Is the screen visible to all of you? Hello? visible. It is So see, this type of device or this type of equipment, this type of equipment. Okay, so this type of device you have already seen whenever तुम लोगों का, जैसे अगर तुम्हारा ट्रांजिस्टर कुछ खोलते हो या मेनली तुम एडाप्टर या कोई भी रिचार्जेबल चीज को अगर तुम खोलते हो, यू विल सी दैट दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, बेसिकली इन नॉर्मली इट विल लुक लाइक दिस। ये देखे होगे, ठीक है, नजरअंदाज किए होंगे। ठीक है, बट ये इक्विपमेंट कहीं ना कहीं यस सर, देखें। ठीक है, कहाँ पे देखे हो मेनली? कहाँ पे देखे हो? सर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर, लाइक सेटअप बॉक्स। हाँ, सेटअप बॉक्स। सेटअप बॉक्स का काम क्या रहता है? एम्पलीफाई करना, कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ठीक है, ठीक। नाउ अगेन वी विल मूव टू आवर टॉपिक। ओके, सो whenever we are going to amplify, that is transistor। एफईटी का फुल फॉर्म का लास्ट पार्ट क्या है? ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर का मतलब ही है तुम्हारा एम्पलीफाई करना। तो जहां पे हाई रेंज एम्पलीफिकेशन होता है वहां पे मेरा बीजेटी उतना काम नहीं करता है। ठीक है, तो टू use the amplification in higher range, my FET will be used. And since JFET is very older version and MOSFET is updated version, so we will use in most of the electronics devices, in we will use MOSFET in most of the electronic devices। Okay, so now I have to go to the MOSFET part, क्योंकि JFET का जो symbol है, it is look like this is JFET का symbol। ठीक है, no not very detail you have to study about JFET, but our main focus is MOSFET। So now MOSFET, so what do you mean by MOSFET? As per its name, that is metal oxide, sorry, metal oxide semiconductor device or semiconductor FET, FET, that is MOSFET। So see, there are three terms। अगेन यहाँ तीन टर्म आ चुका है यहाँ पे। कौन कौन सा टर्म है? मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर। एज आई टोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कोई भी टेक्निकल, इन एनी टेक्निकल फील्ड, व्हाट एवर नोमेनक्लेचर और name will be given, that has some significance।
एक्सेप्ट साइंटिस्ट नेम एंड सम इंजीनियर्स नेम। ठीक है, कोई ना कोई नाम के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। सो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी, दैट मींस एफईटी के साथ, एफईटी इज रिलेटेड टू मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ वी विल मूव टू द MOSFET, that is basic MOSFET structure, basic MOSFET structure and symbol। ठीक है, तो the structure is simply defined or derived from its name, that is metal oxide semiconductor। Now how it will be defined? So whenever we will use the MOSFET, the structure will like your FET। ये तुम्हारा FET का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तुम्हारा मेन डिवाइस का स्ट्रक्चर है। FET में क्या होता था, यहाँ पे सोर्स ड्रेन और ड्रेन और सोर्स और नीचे गेट होता था यहाँ पे, और बीच में चैनल होता था। यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या होगा, सो मेटल विल बी गिवन, oxide layer will be there, and semiconductor type material will be used। ठीक है, so now metal is used, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेटल कनेक्टर होगा, मेटल कंडक्ट, मेटल रहेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे, दैट इज गेट ड्रेन सोर्स। गेट ड्रेन सोर्स एकदम ऊपर के पोर्शन में ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा कोई भी पोर्शन। ठीक है, मेटल टर्म है, सो ये मेटेलिक टर्म, एंड नाउ ऑक्साइड लेयर विल बी देयर। बहुत दिक्कत करता है, ऑक्साइड लेयर विल बी देयर, ऑक्साइड layer will be there, this is your oxide layer, and basically silicon dioxide is used, SiO2, ये याद रखना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन Si, तो ऑक्सीजन का दो वैल्यू है तो डाई, एंड दिस इज ऑक्साइड। ऑक्सीड ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइड, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, सो हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो दैट इज SiO2, एंड ऊपर का पोर्शन में गेट पोर्शन रहेगा, सॉरी ऊपर का पोर्शन में सोर्स और गेट के लिए पोर्शन रहेगा। ठीक है, ये तीनों पार्ट रहेगा, एंड ये सोर्स गेट और जो तुम्हारा ड्रेन है वो कनेक्ट रहेगा ये मेटल के साथ, दिस इज मेटल, एम, आई एम गिविंग एम फॉर मेटल, सो एम इज मेटल। ओके, नाउ ये कनेक्ट रहेगा, इसको दिखाने के लिए आई विल यूज दिस, और बेसिक सिंपली आई विल use another color, this is connected, this is connected,
This is connected. Okay. नाउ मेटल हो गया, ऑक्साइड हो गया, सेमीकंडक्टर क्या रहेगा? दैट इज सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर ये बनता है, दैट इज सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट पार्ट विल बी देयर. ठीक है, सो दिस इज सबस्ट्रेट. ठीक है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? फ्रॉम द राइट हैंड साइड. डी पहले आता है, उसके बाद जी आता है, उसके बाद एस, that is G, and that is S. ठीक है, so now this is the structure, and depending upon your MOSFET, your according to your substrate, your MOSFET will be designed. That is, यहाँ पे P substrate अगर रहा, यहाँ पे अगर P टाइप substrate रहा, तो तुम्हारा ये पोर्शन N टाइप का होगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे N substrate रहा, तो ये पोर्शन P टाइप का होगा. So this is the basic structure of MOSFET. ओके, ये डायग्राम याद रखना कि MOSFET का डायग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम योर FET और JFET. ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन योर सबस्ट्रेट, योर चैनल विल बी डिसाइडेड. अगर P टाइप सबस्ट्रेट रहा, इफ substrate will be of P type, then your channel will be created N type. If the substrate will be N type, the channel will be created P type. So now how the channel and substrate will affect the working principle of MOSFET, we will discuss in our next class. ठीक है, तो आज का क्लास जहां तक हुआ सबको समझ में आया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that much for today. Tomorrow at 7:30 a.m. we will discuss the types of MOSFET, and according to the types of MOSFET we will use how the symbol of MOSFET will be there, as well as how the substrate or channel will affect the working principle of MOSFET, because entire working principle of MOSFET is totally dependent on substrate as well as the channel. अगर substrate ये है तो entire ये जो है ये channel है. ठीक है, तो अगर सबस्ट्रेट P टाइप का है तो N टाइप चैनल यूज होगा, सबस्ट्रेट अगर N टाइप का है तो P टाइप चैनल यूज होगा. गॉट इट? Yes.